Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनीजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines. Well, Finance Minister Nirmala Sitharaman says the Narendra Modi government is committed to systemic economic reforms. Industry bodies welcome the government relief package for various sectors. And domestic stocks log modest losses amid negative cues from other Asian markets. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रणालीबद्ध आर्थिक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग संस्थानों ने विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने वाले सरकार के उपायों का किया स्वागत और अन्य एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू सूचकांक मामूली गिरावट में रहे। Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the Narendra Modi government is committed to the deregulation of the economy and ushering in systemic reforms. She said what India needs is transformational, not incremental changes. In an article in English Daily, Mrs. Sitharaman said the economy welcomed the breath of fresh air, the liberalization of 1991. She recalled the political will of the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao and the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh for liberalizing the economy 30 years ago. Finance Minister wrote in the first term, Prime Minister Narendra Modi ensured the weeding out of 1,200 archaic laws and discarding 58 more in the second term. She mentioned that the previous government's emotional but standalone call to remove poverty, Garibi Hatao, failed because it was not well thought through. Mrs. Sitharaman bemoaned that the past governments did not simultaneously build the necessary ecosystem for aspirational growth and choice for individuals. Highlighting the work done by the present, she wrote, every eligible and volunteering household got electricity, that is Ujala, a toilet, Swachhata, and a clean cooking medium, Ujjwala. The Finance Minister also said individuals and families received cashless health care, that is Ayushman, and life accident over Jeevan Jyoti Suraksha Bima. Mrs. Sitharaman said the smallest of businesses who have no security to offer can avail Mudra loans from 50,000 to 10 lakh rupees. She reiterated that the government's simple guiding philosophy, Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Well, Udayan, welcome to the show. And this actually sounds good that, as Mrs. Sitharaman said, that we do need not just incremental changes but transformational reforms. And this government has taken that first bold step with the introduction of GST, with the demonetization and so on. What is your opinion on Mrs. Sitharaman, our finance minister's views, which she wrote in the newspaper today? I think almost everybody will agree with her about the need for transformation. And I think the key word that has been used is the word aspiration. So all of us, people like you and me, and even people who are not economically that well off, they have a much higher aspiration today. And therefore the ecosystem, as the finance minister rightly points out, has to be so well aligned and so well thought out that, it meets that aspiration. Otherwise, people will lose the kind of faith that's required in the existing system. But, Lalima, I would sort of close this remark by saying that the current situation, the pandemic that we are going through, is a brilliant opportunity, fantastic opportunity for the transformation. Things that you normally don't think of doing, a crisis and a difficult situation actually gives you those opportunities, and those transformations can happen much quicker in a difficult situation, which actually is come to us, and it needs to be converted into an opportunity. I'm sure government will be taking many more steps. Yes, you mean you converted an adversity into an opportunity through implementing the Atmanirbhar Bharat reforms.
Yes, Sonu. उदयन, आपने बात की ट्रांसफॉर्मेशन की, और जो फिनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपनी कमिटमेंट या सरकार की कहे कमिटमेंट जताई है डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड अशरिंग इन सिस्टमिक रिफॉर्म्स। इसकी भी उन्होंने बात काफी बल देकर कही है। सो आपको लगता है कि उनका इशारा ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी की तरफ भी है, और जो रिफॉर्म्स का हम एक सिलसिला लगातार देख रहे हैं 2014 से, उन रिफॉर्म्स को और तेज रखने की या रादर जो पेस है उसको मेंटेन रखने की आगे भी क्या बात की जा रही है? भारत के लिए ओपनिंग अप कितना इम्पोर्टेंट है? सोनू, देखिए, ओपनिंग अप से काफी कुछ, जैसे कि हम जानते हैं, और हम अगर भारत वहां आगे बढ़ना चाहते हैं जहां हम आप हर भारतीय चाहता है, तो उसके लिए फंड की, पैसों की जरूरत होगी, वो फंडेड होती है। वैसे तो हमारे देश में काफी सेविंग्स होती हैं, पर अगर जिस इकोसिस्टम के बारे में फाइनेंस वित्त मंत्री बात कर रही है, वो इकोसिस्टम नहीं होगा तो वो पैसे सही जगह पर पहुंचेंगे नहीं। अगर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे काफी लोगों की जो सेविंग्स है वो गोल्ड और रियल एस्टेट में थी, पिछले 6-7 साल में फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ काफी मूवमेंट रहा है। डिजिटल पेमेंट्स, क्लीनर सॉर्ट ऑफ सिस्टम, उसकी वजह से हुआ है। पर जब आप ये बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते हैं तो बाहर से भी कैपिटल आता है, बाहर से भी पूंजी आती है जो कि आ रही है, पर हमारा पोटेंशियल इससे कहीं अधिक है, क्योंकि हम 135 करोड़ की हमारी आबादी है और इतना बड़ा जबरदस्त बड़ा देश है, इतना जबरदस्त पोटेंशियल है, तो कैपिटल की मूवमेंट तो इतनी जबरदस्त आ सकती है, और हमारे यहाँ पे वो ह्यूमन पोटेंशियल भी है। तो ये जब तक आपकी इनेबलिंग रिक्वायरमेंट नहीं, एनवायरमेंट नहीं होगी, तब तक ये पोटेंशियल हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ये रिफॉर्म ऑनगोइंग बेसिस में चलता रहेगा, और हम काफी सीखते रहेंगे। कई जगह हम गलती भी करेंगे, सही भी नहीं होगा रिजल्ट, फिर हमें सुधार करना, हमें उससे निराश नहीं होना है। तो आपको लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग, जो रेड टेपिज्म है उसको कम करना, सरलता की ओर बढ़ना, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो शायद कुछ एंटरप्रेन्योर्स को डिस्करेज करती हैं, उनको जितना हो सके, जैसा किया भी जा रहा है, उस पर बल देते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना बढ़ेगा, जितनी तेजी के साथ आप एक आइडिया, बिजनेस आइडिया को सोच के आप ऑनलाइन ऑन स्ट्रीम जा सकेंगे, आप आपकी बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे और फिर मेंटेन कर सकेंगे। अगर बंद करना है वो भी आप जल्दी करें, ताकि वो कैपिटल और लेबर जो है लगे हुए थे कहीं और लगे। इसकी जो मूवमेंट है ये तेजी के साथ हो और उसको एक उचित तरीके से हो। अभी हमने जैसे पिछले कुछ सालों में क्लोजर ऑफ बिजनेसेस, बैड लोन्स के बारे में जो ट्रीटमेंट है, और सुनो, सच पूछे तो ये एक हर कंट्री, जो हर देश है, अपने हिसाब से सीखता है। इसके जो मानदंड है और जो टेक्स्ट बुक रूल्स है, ये तो सबको ही मालूम है, और हमारे देश में जो चीज काम करेगा वो दूसरे देश में नहीं, और दूसरे देश का जो एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ पे शायद ना काम करे। तो ये एक सीख है, एक तजुर्बा है जो हमें मिल रहा है, और हम अच्छी बात ये गुड न्यूज है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। You just mentioned things about the business rankings in the ease of doing business. Well, our ranking in the ease of doing business has gone up, Udayan, and there's no two views on that. And you just mentioned that we have enough forex reserves, but we still have scope for more. That sounds interesting. The fact that the Prime Minister has often mentioned with a punch that most governments keep making laws, but this government has done away with the 1200 archaic laws. We know we have many laws which are redundant because they were made during the British era. So do you think all these measures have taken us a step forward towards a stronger economy, and that is what is reflected in the fact that we are still at 52,000 plus BSE Sensex? Is that a reflection of all the steps which the government has taken all these years? It's been in absolutely. Lalima, the point is that complying with, you make a law, then complying with it should not take a person's time, whether it's an individual or a business, and then it should not be costly.
So both these things have to be worked upon. And to be honest, I think everybody in the government will also agree that it's a work in progress. It's absolutely not a finished article. And we are making progress, and this progress needs to continue. And the good part, Lalima, is that thanks to the enormous digitization that's happened across the board, whether it's government or otherwise, that simplification is getting better and better. So things which would have taken years for other countries to do, thanks to some of these things that have happened, some of these adversities, we are leapfrogging through, and we should take this opportunity with both hands. राइट उदयन, आपने बात की वर्क इन प्रोग्रेस की। सरकार का जो समर्थन होता है इकोनॉमी के लिए वो हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और उसका हमने कल एक श्रृंखला देखी। उस पर जो उद्योग जगत की प्रतिक्रिया है उस पर नजर डाल के इस पर आपसे चर्चा करेंगे। उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराने के सरकार के उपायों का स्वागत किया है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6,28,000 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की थी। फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव मेहता ने सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि नए उपायों के साथ कुछ मौजूदा राहत उपायों का भी विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान देना मौजूदा समय की आवश्यकता है। श्री मेहता ने कहा कि इन उपायों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों पर दबाव कम होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने भी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने कहा कि स्वास्थ्य और पर्यटन पर विशेष ध्यान देने के साथ सरकार की घोषणा में लक्ष्य आधारित हस्तक्षेप किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में नकदी बढ़ाने के उपायों से उद्यमी कोविड महामारी के असर को कम करने में सफल होंगे। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन क्षेत्रों और छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना के विस्तार का स्वागत किया। एसोचैम ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य महामारी से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराना है। एसोचैम ने कहा कि सरकार का ये पैकेज अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार में सक्षम विभिन्न क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करेगा। उद्यन, क्या कहेंगे, कल जो पैकेज आया है 6.29 लाख करोड़ का, जिसमें एमएसएमईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा छोटे बोरोअर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, रूरल हाउस होल्ड्स, कोविड हिट सेक्टर्स, टूरिज्म जैसे जिनके लिए राहत पैकेजेस लाए गए हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाई गई हैं, कितनी आपको आशा है कि बैंक्स गवर्नमेंट बैक गारंटीज के आधार पर लेंडिंग स्टेप अप करेंगे और इन क्षेत्रों की जो संकट है वो थोड़ा कम होगा? देखिए, डेफिनेटली काफी कुछ हेल्प जरूर होगा, पर जहां तक बैंक लेंडिंग के बारे में बात है, बैंक्स को कुछ नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो वो जिनको आप ऋण दे रहे हैं, क्या वो अभी बैंकेबल है कि नहीं, मतलब क्रेडिट वर्दी है कि नहीं, ये काफी कुछ सवाल उठता है। इससे हेल्प जरूर हो जाता है। आप अगर क्रेडिट गारंटी देते हैं, बैकिंग देते हैं, उससे मदद तो मिलती है, पर अगर जो ऋण लेने वाला है उसकी अगर बैंकेबिलिटी में फर्क पड़ गया है तो उस बात फिर अलग हो जाती है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कितना कारगर होगा। पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा सोनू कि ये मुझे ये सरकार की जो अप्रोच है वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। ये अलग थिंकिंग है, ये राइफल शॉट अप्रोच है रादर देन कारपेट बॉम्बिंग, जैसा अमेरिका और कई अलग देशों में आपने देखा होगा कि एकदम से बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज ला के आपने कारपेट बॉम्बिंग कर दी है। यहाँ पे ये राइफल शॉट अप्रोच है। तो एक बार अनाउंसमेंट हुई, फिर अनाउंसमेंट हुई, फिर अनाउंसमेंट हुई। तो मुझे लगता है ये साल खत्म होने से पहले ही कुछ और अनाउंसमेंट होंगे, क्योंकि आप अगर देखें जैसे होटल हैं, मॉल्स हैं, रिटेल है, वो कुछ एरियाज हैं जो अभी भी जहाँ पे आपको बातचीत अभी नैरेटिव में नहीं आई है। तो ये जैसे जैसे हमारी अनलॉकिंग होती जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं लगभग श्योर हूँ कि कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आगे चल के भी होंगी। अनलॉकिंग जैसे जैसे खुलती जाएगी इकोनॉमी, वैसे वैसे आप प्रोत्साहन देंगे। पहले अनाउंस करके फायदा नहीं है। फिर आप सप्लाई साइड को जब फिक्स कर लेंगे, फिर डिमांड को, मांग को प्रोत्साहित करने के लिए दिवाली के आसपास या उससे पहले आप पाएंगे कि कुछ कदम सरकार डिमांड बूस्ट के लिए भी कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। डिमांड बूस्ट के लिए आपको लगता है कि जो सरकारी इंफ्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जिस पर काफी जोर दिया गया बजट में, उसको फ्रंट लोड करना भी एक बहुत एक क्रूशियल स्ट्रैटेजी हो सकती है?
जरूर हो सकती है, पर मुझे लगता है कि कई जगह में आर्ग्यूमेंट अभी है वो सरकार, मैं समझ सकता हूँ सरकार अभी नहीं कर सकती है, पर जब आपकी अनलॉकिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी, काफी इम्पेटस पड़ जाएगा, बेसिकली आपकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होती चली जाएगी। और देखिए सुनो, अगर आप आंकड़ों को देखिए इसी दर से अगर चलता रहेगा तो तकरीबन आपके सितंबर के अंत तक 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ जो भारतीय हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इसका असर जबरदस्त होगा और तकरीबन आपके उसके और 1.5 महीने तक आप 450 मतलब 45 करोड़ हो जाएंगे। तो हमारे अर्बन पॉपुलेशन काफी हद तक वैक्सीनेट हो जाएगी। उस वक्त अगर एक्साइज और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि इस वक्त फ्यूल और दूसरे कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है, शायद वहां पे कुछ काम हो या कहीं और जगह हो, वो तो सरकार सोच के करेगी। तो ये जो है ये राइफल शॉट स्नाइपर लाइक अप्रोच है, जहाँ पे आप बहुत प्रिसाइज इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अनलिमिटेड एम्यूनिशन नहीं है। तो आप इसको समझदारी के साथ करेंगे कि एक ही तीर से आप 2 शिकार कर लिया, 4 शिकार कर लिया, उस टाइप से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। Within this relief package, the government has tried to kind of give solace to stakeholders as far as tourism is concerned, health sector is concerned. Even the tourist guides have been taken care of. That's very heartening. But the $billion question, I was going to say $1 million, but probably billion rupee question one should say now, is that Will all this relief package not put pressure on the government's finances, also considering the fact that the oil prices are going high in the international markets? How will the government balance the expenditure and the income and the relief package and all of it? Well, Lalima, the point is, this is not some kind of a handout, It's not like waiver of loan or something like that, where you're absorbing a loss or a write-off. What you're doing, you're trying to, give an incentive so that the income happens, right? Economic activity happens, income happens. Through that income, you will obviously generate tax revenue. Right now, it's a lot of it is getting loaded on the indirect side, and that's what's putting inflationary pressure. So what you want to do is to get the income back in place, unemployment down, and more participation out there. When people start earning more, they'll start spending, and people who were holding back, they'll also start spending more. And this is not going to take that kind of a time. And then you hope that whatever you were in the areas in terms of borrowing or whatever you've done, you recoup it and you recoup it very quickly. So that is the whole fund that I think the government is taking, which is very sensible. That seems to be the obvious course, I would argue. Right. All right, let's take a look at another story. Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Nitin Gadkari, today called for creation of rating system for MSMEs and a dashboard for effective monitoring of MSME schemes. Addressing a webinar by the Chamber of Indian MSMEs, he said simple and transparent methodology should be evolved to give ratings to MSMEs to enable them to get finances from the banks and institutions. The minister said the whole world now wants to invest in Indian industry, and with effective rating system, MSMEs can get good investment from abroad. Mr. Gadkari proposed setting up of dashboard for monitoring schemes to prevent delays in decision making. He asked SIDBI to take decisions within 3 months and provide support. He said it is time to make our system transparent, time-bound, result-oriented and performance-oriented, and help appropriate entrepreneurs with good track record. Udayan, so far we had heard of the Gujarat Chief Minister very much addicted or very much used to a dashboard of many schemes. How do you see this working? Of course, MSMEs are very important considering that they contribute more than 40% to the GDP. I really like the idea. But Lalima, as they say, the devil lies in the details and how well you execute. So, but it's really, I really like the idea simply because, if India is going to go somewhere, then if you're going to solve issues like unemployment, etc., we need a large shot of entrepreneurship. We have to encourage, because this is where the employment is going to come. Large companies, government sector, there's only so much employment, so much of engagement they can do. So this is a very critical thing. They may not
involve billions of rupees, etc. But what they do is they engage a lot of people, support a lot of families, and a lot of GDP that you mentioned. So this is very important. How the government takes this forward will be quite interesting. And always a dashboard. There is a certain kind of accountability set for all the stakeholders, for all the people who are implementing the schemes. It makes it more time bound. It makes it more result oriented. Right. Absolutely, Lalima. There are a lot of people, a lot of MSMEs, a lot of small enterprises, they simply don't want to, put in more effort to grow larger, simply because of the hassles that they have to go through. Yeah. Now, if you have systems like this, that's why I like this idea so much, because if you have systems in place, then you can pinpoint where the things are getting stuck, and there is an accountability. Those things can be fixed. So people who are MSMEs today can be large corporations or large entities tomorrow. So we just don't need a large pool of MSMEs. We need people to graduate onto a bigger league. Right. So if that is something that can be done, the people will see those success stories and more people will come in. So that's how a positive sort of a circle happens. एंड उदिन ब्रीफली जो रेटिंग सिस्टम है फॉर एमएसएमईज, आपको लगता है उससे एमएसएमईज में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनके पास एक इंसेंटिव होगा? ये जो बैंकिंग और जो फंड्स उठाने वाली जो बातें हैं, जितनी चीजें हैं, इंसेंटिव्स हैं, अगर अच्छी रेटिंग होती है तो आपको वो सब चीजें मिलनी चाहिए. रेटिंग से तो मैं यही समझता हूँ, बाकी आगे मंशा क्या है ये मेरे को उतना क्लियर नहीं है. तो रेटिंग अगर अच्छी होगी तो फिर आपको लोन्स जो मिलते हैं, आपको जो इंसेंटिव होते हैं, जो जिस स्कीम के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, वो सब बातें आ जाती हैं और एक इंसेंटिव बन जाता है कि एक गुड बिहेवियर, गुड प्रैक्टिस को आप फॉलो करें, आप टाइम से करें और उसका रिवॉर्ड आपको मिले. I think just as we have clean cities का competition, we can have a healthy competition among MSMEs also, so isn't it? Yeah. Right. हम चलते हैं अब शेयर बाजारों की ओर. सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली नुकसान पर बंद हुए. अन्य एशियाई शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक लगभग 0.4% की गिरावट में रहे. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.35% के नुकसान से 186 अंक कम होकर 52,550 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.42% के नुकसान से 66 अंक कम होकर 15,748 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक भी 0.42% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% की गिरावट दर्ज हुई. The Sensex and the Nifty today closed with modest losses. Both stocks fell around 0.4% amid negative cues from other Asian equity markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 186 points or 0.35% to close at 52,550. The Nifty at the National Stock Exchange also fell 66 points or 0.42% to finish at 15,748. In the broader market at BSE, the mid-cap index also fell 0.42% and the small-cap index slipped 0.07%. In the Sensex pack, shares of 13 companies climbed while 17 fell. Power Grid was a top gainer as it surged 1.8%. Hindustan Unilever gained 1.4% and NTPC climbed 1.3%. IndusInd Bank gained 1%. In the list of companies which fell, Kotak Bank plunged 1.6%, while ICICI, Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra and Maruti declined 1.5% each. In sectoral indices, shares of 16 out of 19 sectors climbed. Healthcare sector rose 0.7%, FMCG gained 0.6% and the utilities sector added 0.4%. Among the list of sectors which fell, metal sector stocks tumbled 1.4%, oil and gas and telecom both fell 1.2%, Bankex slipped 1.1% and auto slipped 1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,587 companies gained while 1,639 fell. Shares of 125 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मामूली गिरावट से 74.23 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया. डॉलर में मजबूती के बीच रुपए में ये गिरावट आई. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.2% की वृद्धि से 92.07 पर पहुंच गया. थोड़ा ब्रीफली बताएंगे उद्यन की शेयर बाजार में अभी
आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि कल ओपनिंग ट्रेड में फिर एक नए शिखर पर पहुंचा था? देखिए, ये काफी कुछ अमेरिका में जो कमेंट्री चल रही है उसके हिसाब से होगा। वहां पे क्या यूएस फेडरल रिजर्व क्या निर्णय लेती है, और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा आने वाली है जो कि यूएस में बेरोजगारी या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो डेटा है जो फ्राइडे को आएगा, और वहां से वो यूएस फेडरल रिजर्व उस पर कड़ी नजर रखी हुई है। और अगर वो सुधार और तेजी के साथ होता है तो वो साइकिल को जो भी कमेंट्री डिसीजन लेगी या कमेंट्री नैरेटिव आएगी उसी हिसाब से मार्केट उससे क्यूज लेके रिएक्ट करेगी और एक्शन लेगी। जी, एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था। निवेशकों को चिंता थी कि इस क्षेत्र में कोरोना वायरस के फिर उभरने से आर्थिक सुधार को क्षति पहुंच सकती है। अमेरिका में मजबूती के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा लचीली मौद्रिक नीति से निकासी की गति बढ़ा देने पर फिर विचार करने के बाद एशियाई बाजारों में ये गिरावट आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.2% लुढ़क गया। हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक दोनों 0.9% की गिरावट में रहे। जापान के निकेई में 0.8% का नुकसान दर्ज हुआ और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% गिरकर बंद हुआ। हालांकि यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.3% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 0.4% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.8% की तेजी पर था। The Nasdaq jumped to an all-time high yesterday, supported by tech-related stocks amid fears over a spike in COVID-19 cases across Asia. On the other hand, Dow Jones fell as investors awaited U.S. labor market data for further cues. The Dow Jones Industrial Average fell 0.4%, while the S&P 500 added 0.2%. The Nasdaq Composite Index climbed 1%. Well, talking about oil prices today rose marginally. The crude prices recovered after logging losses of around 2% in the previous session amid concern of resurgence of coronavirus cases. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $74.80 per barrel, while WTI crude prices were around $72.90 per barrel. ब्रीफली बताएंगे कि जो ओपेक प्लस की मीटिंग होने वाली है उससे आपको क्या आशाएं हैं? देखिए, वो अगर की पॉइंट तो ये है कि वो ज्यादा सप्लाई मार्केट में छोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर वो सप्लाई नहीं छोड़ते हैं तो ऑयल के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। अनलेस ऑफ कोर्स हम ये पैंडेमिक में के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं तो फिर सप्लाई के ऊपर वो लोग जो निर्णय लेते हैं आपूर्ति के ऊपर, वो काफी कुछ इम्पोर्टेंट होगा। चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के मूल्यों में गिरावट के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 210 रुपए कम होकर 46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। ताजा रिपोर्टों के अनुसार जुलाई अनुबंध वाली चांदी का मूल्य भी 440 रुपए की गिरावट से 67,700 रुपए प्रति किलो के करीब था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,771 प्रति आउंस पर था। चांदी भी गिरावट के साथ $26 प्रति आउंस पर थी। Yes, a brief comment then on gold. We are the world's largest consumer, not to forget. Yeah. Lalima, that's pretty much because of dollar getting stronger against all currencies. And the same has happened with yen, but dollar and gold have a relationship, and that's what we are seeing at play. जी, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन। धन्यवाद सोनू। And now friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says the Narendra Modi government is committed to systemic economic reforms. Industry bodies welcomed the government relief package for various sectors. And domestic stocks log modest losses amid negative cues from other Asian markets. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रणालीबद्ध आर्थिक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग संस्थानों ने विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने वाले सरकार के उपायों का किया स्वागत और अन्य एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू सूचकांक मामूली गिरावट में रहे। Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood bidding adieu. Namaskar.